हमारा पहुंच जाएगा। बाकी आप लोग ये स्वागत करते हो, आप लोग ये कर सकते हो। तो मैंने अपना सारा बंदोबस्त कर दिया हो कि अब मैं अपना वीडियो करते हूँ स्टार्ट। ओके, तो आप लोग ये भी करने को लाइक नहीं किया, लाइक करो। ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, और शेयर करें। बेल आइकन को नहीं दबाओ, इंशाल्लाह आप लोगों को हर नए वीडियोस हमारा पहुंच जाएगा। बाकी सबकी सपोर्ट करने का शुक्रिया। इस तरह की मजीद भी नए नए वीडियोस पाने लाइक सब्सक्राइब करो। Your total dismissed there. ठीक है खुलेगा। गाय टूल डिसमिस करते यार। भाई सब दोस्त वीडियोस फॉलो करो। ओके, चैनल लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बेल आइकन को स्किप ना करो। इंशाल्लाह हर नए वीडियोस आप लोगों के साथ भी हमारा पहुंच जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच, जिसने वीडियोस देख लिया लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब की और फॉलो कर दी। ओके, नॉट भाई आ जाता हूँ अपनी वीडियोस की तरफ और आप लोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है वाइट शार्ट नोट ऑन रेस्पायरेशंस। रेस्पायरेशन मानी 10 फुट से पहला हबरेकुम तक मानी चैप्टर नूम रेस्पायरेशंस। The world respiration gravity with a letter word which means मतलब दा दे कि breathing. The respiration main मतलब दा सांस दे। bila cellular respiration definition से respiration oxidation reduction process पहले उसी का ना inside the cell के दना और organic food glucose की गंदी oxidize शी मतलब जब inside the cell दना cells के दना कम oxidation reduction process उसको कम food glucose अगर breakdown उसको है convert to it water CO2 था मतलब करना और प्लस एनर्जी हीट वगैरह प्रोड्यूस एनर्जी पैदा हो। The process is called synthesis of ATP और cellular respiration या respiration the oxidation of food करेगी कि या reduction of food कि release की मतलब so energy. The oxidation of food substance which can release the energy is called so cellular respiration या living. Reduction सिंगे कि what is reaction? The reaction बस सिंगे कि these reactions करेची C2H12O6 plus 6O2 रायोजेशन ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन चकरा रायोजेशन नसे चल की दे पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की वाटर प्रोड्यूस की और सारे प्लस से भी एनर्जी भी इंपॉर्टेंस है ये दे प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस को ली के कार्बन टू नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म ते एनर्जी जरूरत थी और दे इंपॉर्टेंस दार चे दे प्रोसेस पत्रू बांधे मुंगा एनर्जी पैदा को एक ऑर्गेनिज्म मतलब जरूरत भी नो ऑर्गेनिज्म तखपला एनर्जी अति प्रोसेस पत्रू बांधी और मिलोशियोरी। बाकी भाई वीडियोस फॉलो चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को स्किप ना करो। इंशाल्लाह हर नए वीडियो भी हमारा पहुंच जाएगी। बाकी आप सब दोस्तों की सपोर्ट करने का शुक्रिया। इस तरह की मजीद भी नए नए वीडियोस फॉलो करो। उस तरह की टाइप्स दी ब्याज रेस्पायरेशंस रेस्पायरेशन दी भी शी पर टू टाइप्स मानी की टू टाइप्स दी रेस्पायरेशन पके अकर की और कम कम टाइप्स दी तो आई कि योदे एरोबिक रेस्पायरेशन योदे एनारोबिक रेस्पायरेशन ودي دوش aerobic respiration ده خاغ respiration دي كنا ده break down the food substance की हो मौजूदगी के ऑक्सीजन anaerobic होते कि large amount of energy produce anaerobic خاغ respiration दे कि break down the foods की हो absence of oxygen होते कि small amount of energy بدها respiration وز هذه other two types the respiration चीज़ exchange जो externally दे जो internally خاغ exchange the gases between the body terminal the skin lungs gills external environment की दा related थी देखिए skin राजी gills राजी lungs वगैरह तो externally वदा मतलब दिस राजी foods कार्बन दा external ले internal आगा जैसे fluid सरकारी blood सरकार भी heart wall ये टू चीज़ें सरबादे internally कार्बन और वदा कि हम internal हो या respiratory system से जब इनकी what is respiratory systems A simple animal ci kam da respiration occur. Your simple animal ki kala respiration occur shi through a general body surface. While the complex animal human respiration occur through specialized respiratory system. لكن ده اسكال شي respiratory system بيجي. Respiratory system ده تبي شيء
یو سمپل انیمل چې ریسپایریشن اکر شي through the general body کې، او while the complex animal human چې کوم respiration اکر شي through specialized respiratory system دی. اوس باندې properties دی بیا respiratory surface. What is the respiratory surface؟ د شي properties څه دي خصوصیات. respiratory surface هغه surface دی چې respiratory organ through which gases exchange کوي. respiratory surface موږ هغه ته ویلی شو کله چې respiratory organs چې پای باندې gases exchanging اکر وکړي هغه ته موږ respiratory surface ویلی شو. بیا د properties دی خپلې چې یو د thin epithelium دا هغه surface دی چې باندې exchanging د gas کیږي must be very thin wall. The distance to the diffusion take place may be minimum. thin epithelium دا هغه surface دی باندې respiration اکر کیږي ډېر زیات دا نری وي تقریبا دی چې کوم surface دی هغه 1 ملي میټر وي او دی باندې ډېر په اسانۍ سره gases exchange کیږي. way more permeable. The surface through which exchange اکر کیږي respiratory gases ده. respiratory gases رالو پر surface باندې دی هغه through exchanging کیږي نو take place must be permeable which so more gases will be diffused or pass through it. نو surface چې کوم دی through which exchange اکر کیږي respiratory gases نو take place کیږي must be permeable وي or so more gases will be diffused or pass through it. او نور زیات ګیسونه دي نه مطلب څه کیږي pass کیږي. भाई चैनल फॉलो लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो बेल आइकन को स्किप करो ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो हमारा पहुंच जाएगी. बाकी आप सब दोस्तों की सपोर्ट करने का शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी. शेयर वीडियो के बेल आइकन को नहीं दबाई ताकि आप लोगों को हर नई वीडियोस हमारा पहुंच जाएगा. बाकी खुश रहो आबाद रहो और कामयाब वीडियो देखते हो. किधर किधर से हमारे लिए तो एक कमेंट करो जो इधर से मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ मतलब भी मुझे पता लग जाएगा मैं भी आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूँगा. ओके बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो बेल आइकन को स्किप ना करो क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक नई वीडियोस हमारा पहुँच जाएगी. नो बाकी रहते भाई वीडियो सपोर्ट है वीडियो सपोर्ट के चैनल लाइक सब्सक्राइब के और शेयर के बेल नहीं करना सकते बाहर ना हो तमाशी नहीं करना आता है. उस राधी चाहिए मोर permeable मशहूर और ये surface through which exchange की respiratory gases the place must be permeable पकड़ दे पर्दे पुशाने वाली just so more gases will be diffused जितने अड़ीर की सुना पास की. large surface area वाली respiratory surface should have a large surface area वाली so that minimum air O2 taken to maximum carbon dioxide given out. जिसमें मुझे रे ऑक्सीजन ना है दुमरो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे आउट की पति वजह से एरिया लार्ज सरफेस एरिया पकड़ना. Surrounding the wheat surface what is the respiratory surface should be kept moist what is so that gases exchange अगर की easily because gases cannot pass through dry surface easily. capillary network से भी की the respiratory surface capillary network में दीजिए विशुहा respiratory surface जगह should possess key extensio network which is blood. Now capillaries through which blood can pass at an adequate speed. In this way complete diffusion gradual is maintained which help in rapid diffusion of ventilation. There should be a good ventilation mechanism to maintain a step high diffusion gradual across the respiratory surface. Ventilation दे तो की क्या ना ventilations कर चाहिए there should be good ventilation mechanism which to maintain such step high diffusion gradual which across the respiratory surface. Describe the surface of structure of human respiratory system the human structure describe the respiratory system describe so the human respiratory system structure the human respiratory system structure sade a system of organ have a system the organ je functioning key in respiration right होंगे is no respiratory system है तो ये have a body जिदा high come organ अगर जे work की respiratory सर्फ ना the system have organs जे function की is respiration दा के दमुंगे स्काल से दमुंगा the system
هغه organs چې هغه موږ له as a functioning key د respiration هغه دا کې زموږ respiratory system ویلي شو. respiratory system یې ته ویل کېږي چې زموږ د body systems هغه organ چې هغه موږ له as a work key د څه هغه موږ له work key د respiration function key دا کې ته موږ respiratory system ویلي شو. اوس راځي چې components دي نو human respiratory system consists of the components your pair of lungs دی یو د nose air passageway دی او یو pair of lungs which carry air to pump lungs او مطلب air دننه کېږي د پامپ کې په شکل د lungs په تو لومړنی څه دی what is the air passage the respiratory tract یا tube هغه respiratory tract او یا tube چې which pass gases pass کینو toward lung ته نو exchange کېږي is called air passage زمونږ هغه tube respiratory air passage basically the respiratory tract or tube which can pass the air چې هغه موږ ګیس پاس کیږي نه through a lung نه او exchange پکې کېده کې زمونږ is called air passageway هغه وایي ته ویل کېږي دا هغه tube دی یا دا هغه air passageway ته ویل کېږي دا هغه tube دی یا هغه tract دی چې کله ګیس پاس شي دی ته through a lung نه نو یې کې موږ exchange راوړي دا کې زمونږ is called air passageway ویل شولي parts of the air passageway consists of the following یو پکې لومړنی nose څه شي دی nose هغه only external part دی چې respiratory system کې هغه links to the respiratory system سره with the external environment سره related چې exchanging کې د respiratory gases دا کې زموږ nose ویل شو nose زموږ د respiratory system یو external part دی دا related د external environment دا موږ exchanging of gases کې nose present په ventral interior side of face زموږ په مخ باندې چې کوم ventral interiorly مطلب درمیانه کوم side of face دی ای باندې زموږ nose سره present دی location is the kasho o shape is a conical shape the structure of nose the external visible part che kam the respiratory system which is slightly different the external feature in which in each individual depending upon the ethmoid bone and the cartilage present in nose no but each nose structure consists of bones cartilage and fatty tissue चैनल भाई फॉलो करो लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को स्किप ना करें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियोस हमारा पहुंच जाएगी भाई सब दोस्त वीडियोस फॉलो करना हो चैनल लाइक करना चैनल को सपोर्ट करना हो बेल आइकन को स्किप मत करना ताकि आप लोग को हर नए वीडियोस हमारा पहुंच जाएगी ओके मैं सब दोस्तों की सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करता हूँ इस तरह की मज़ीद भी नए नए वीडियोस को फॉलो करें चैनल लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को स्किप ना करें वीडियोस को भाई अगर पसंद आए हो लाइक फॉलो शेयर और बेल आइकन को स्किप नहीं चैनल भाई फॉलो करो लाइक सब्सक्राइब करो शेयर करो बेल आइकन को स्किप ना करो इंशाल्लाह आप लोगों को हर नए वीडियोस हमारा पहुंचेगी बाकी भाई अब मैं इधर बैठ रहा हूँ क्रिस्टीन पट को हमारे घर आप रहे हैं वीडियोस भाई सपोर्ट के चैनल लाइक सब्सक्राइब की शेयर के बेल आइकन स्किप ना करो के सपोर्ट दे गड़ी हमना وشاله وابهاتي سيوريو वीडियोस मुहावशों चैनल फॉलो लाइक की सब्सक्राइब के और शेयर के बेल आइकन स्किप ना की नो बाकी उम्मीद स्वागत करता हूँ आप लोगों को भी लगा अच्छा लगेगा अगर पसंद आए हो आई होप लाइक फॉलो करो चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो थैंक यू सो मच वस्सलाम खुश रहो विश यू
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय चैनल एंड माय फर्स्ट न्यू व्लॉग वीडियो। आज भाई हमारा एक नया सा वीडियो है। वीडियोस फॉलो करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ओके, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आप लोग को हर नए वीडियोस हमारा पहुंचे। बाकी भाई आप सब दोस्तों को सपोर्ट करने का भाई बाहर ठंडी ठंडी हवाएं है, ओके, आप लोग देख सकते हो। मुझे अगर वीडियोस को पसंद आया हो लाइक फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया, ओके। अब भाई बस मैं बैठ रहा हूँ और अपना व्लॉग को बना रहा हूँ, ओके। टॉपिक्स वैसे भाई वो रिगार्डेड कि nose for shows rarity so pairings function the nose respiratory gases enter key respiratory that are hair them filters large dust nose hair severe key defense mechanism against harmful pathogen mucus cilia jekam de filter की air will prevent the entry of foreign particle and microorganism dust. Mucus also help for keep the moisture in the air given to prevent the so damaging of respiratory surface. Respiratory surface sugar the munga damaging key no dry air. Underneath the mucous membrane there are blood capillaries that help for keep to warm the air about 30 degrees C according to internal temperature. Also, what is pairings? Pairing size pairings about 4.5 H long. Shape. The nasal cavity open to cone shape mute muscular passage or tube is called pharynx. Kala jamunga nasal cavity open kudanna chikam cone shape tidak kidamungis. Also shu pharynx value. 4.5 inch long location. The upper end of pharynx. Upper end chikam dera pharynx wider they or located just below the lower surface of the skull, or while the lower end of the pharynx is narrow, which is located at the level of the sixth cervical vertebra. Carbon 6 or pairing is located at the base of buccal cavity. Mucous members pairing they also lined with the mucous membranes which keep it so moisturized. Region of pairings. Pairings region pairings has three main regions. Your nasopharynx, oropharynx, your the laryngopharynx. Nasopharynx it is found between the base of the skull and the soft palate. It connected to posteriorly nasal cavity and function air passageway. Oropharynx the connected to the oral cavities and wall the swelling. Lanopharynx the most inferior region is the pharynx where the respiratory and digestive system divergent. What is larynx? So the function is the mucus of pharynx chikam de kana aga moisturize ki the air warm गर्मी or air or trap की dust or solid particle वगैरह और regulate की air or put to trachea or esophagus. Larynx से कार्य sound box wise book तेरे location. It is cartilaginous structure the larynx present on the base of the pharynx. The pharynx for base or on the upper end of the trachea. It also so lined with mucous membrane. चैनल भाई फॉलो लाइक सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना, बेल आइकन को नहीं दबाओ। इंशाल्लाह आप लोगों को करने वीडियोस हमारा पहुंच जाएगी। बाकी आप सब दोस्तों सपोर्ट करने का शुक्रिया और दिल दोबारा चलूँगा ये वो उस निश्चय की तरह को पता नहीं जो पेरियानो तख्तूल हो चल Nolering cartilaginous structure be present on the upper end of the base of the pharynx spondy or upper end of the trachea lined with mucous membranes. Cartilaginous. The layering composed of the cartilaginous plates which prevent the collapse of the larynx. Glottis and epiglottis the opening chikanamunga uku the larynx. Agitamung is known as glottis ratio which is guarded to by the lid netherbium called epiglottis. The epiglottis prevent entry of food or liquid into the larynx. Vocal cords inside the larynx there are two fibrous bands. Vocal cords help for in voice production or air pass through the larynx the vocal cords starch and produce so sound or then sound is changed into word by tongue and lips. Come to them, Bajava come Habri or come to them lips.
no habari na basically changing by local page function the layering تدي layering جو small air passage دي line with mucous membrane ترى وخيل بركي filtration absolutely air كي air filtration की सो की help लो भाई तुम फॉलो लाइक सब्सक्राइब करोगे शेयर करो बेल आइकन को स्किप ना करो इंशाल्लाह हर नई वीडियो आपके सामने हमारा पहुंच जाएगी ذا شكل الذي layering sorry layerings or pairing sorry no function the layering ده اللي layering جو small ولا كنت air passage way ده line ده the mucous membrane سره او help ورکی بس कि filtration of air چې کوم راځي هم لږه filter کی او layering से کار layering also called sound books so because produce की so ملا sound no يعني bang ویلو بس موږ کم کړی اټه وری نو باقی به ویډیوز लाइक सब्सक्राइब करना होगा चैनल शेयर कर बेल आइकन को स्किप ना करें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी हमारा हर नई वीडियोस पहुंच जाएगी ओके बाकी वीडियोस को सपोर्ट करो ओके चैनल लाइक फॉलो करें ओके सब्सक्राइब और शेयर करें भाई बस धक्का होगा ना और धक्का का पिछू असो का तो और बस हम लोग एक इस तो नो को वीडियो बहुत चैनल फॉलो लाइक करना होगा सब्सक्राइब करना और शेयर करना बेल आइकन को स्किप मत करना ताकि आप लोगों को हर नए वीडियोस हमारा पहुंच जाएगी बाकी सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हो जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया ओके वीडियोस को लाइक करके चैनल को फॉलो करिए नो भाई उस राजी ची फंक्शन ऑफ लेयरिंग दा ची लेयरिंग जो स्मॉल एयर पैसेज वे दा ची लाइन विद द म्यूकस में ओहेल पर की फिल्ट्रेशन ऑफ एयर की लेयरिंग आल्सो साउंड बुक सो बिकॉज मुंग जैसे की प्रोड्यूस की साउंड ट्रिकी या से दे ना यो वाइन पाइप ते ट्रिकी या यो ट्यूबलर cartilaginous structure भी दी ट्रिकी या से दे यो ट्यूबलर cartilaginous structure भी or also called the wine pipe very issue or lie below the larynx landi or it is internally lined chicken the ciliated epithelial cell aga produce की सो mucus हम जैसे कि प्रोड्यूस की mucus बाकी भाई the tricky है your tubular cartilaginous structure दे जे also called the wine pipe very issue below the larynx or internally lined ciliated the epithelial cells such produce mucus length tricky about 11 centimeter long the or 2 to 2.5 centimeters wide the cartilaginous rings the tricky bears 16 to 20% horseshoe shape the cartilage rings which prevent kiso the tricky from collapsing and keep it open function of trachea the mucus of trachea je kana moisty and warm ki the air trachea provide ki your passage for air to move toward lungs or mucus and cilia of trachea filter ki the air to protect the respiratory surface from accumulation of foreign particles bronchi the trachea divides into right and left bronchi in which enter each lung bronchi after entering lungs divide into secondary and tertiary bronchi करे चिमन जरा मतलब ट्रिक यह डिवाइड का कोई राइट और लेफ्ट तरफ तो ब्रोंकी के एकदम ब्रोंकी और बेन टर्की की टू ईच लंग्स ना ब्रोंकी आफ्टर एंटरिंग की लंग्स डिवाइड की द सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी द लंग्स वापस डिवाइड की सो को द ट्रिक है राइट और लेफ्ट ब्रोंकी से भी the right bronchus chikunde has larger diameter in the shorter while the left bronchus has smaller diameter is longer cartilaginous tertiary bronchi are cartilaginous chikunde air passage de ori which line be with the mucous membrane cell
The bronchocartilaginous cell are air passage the line the cell the mucous membrane. Function of bronchi is the bronchi functions. Bronchi you can left plus right. After divide kick the air for each lung man. Bronchi also line the cell with the mucous membrane which filter kiso or moisturize kiso and warm the air. Bronchioles. The bronchi divide she or redivide she forming air wave network through inside the lung. It's called bronchiole. Kada bronchi mung divide ku dubare redivide ku. Where the network inside the so air wave network one is inside the lung the lana. The kitam is called bronchiole. Bronchiole is bronchi divide and redivide the airway network inside the lung is called so bronchioles. Non-cartilaginous चैनल भी फॉलो करो कि लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को स्किप ना करें इंशाल्लाह हर नई वीडियो आप लोगों के साथ भी हमारा पहुंच जाएगी बाकी आप सब दोस्तों की सपोर्ट करने का शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया वीडियोस को लाइक कर दिया होगी चैनल को फॉलो की और शेयर भी कर दिया होगी बेल आइकन को नहीं दबाए बाकी भाई वीडियो सपोर्ट किए वो सादा मची alveoli. The bronchiole divide and redivide and finally open a small collection of air sac called alveoli. करची bronchiole divide ही और redivide ही और finally मुंतसकी open ही उखी so your small मतलब your small collection of air the bronchiole divide and redivide finally open the small collection of air sac is called so alveoli. करची bronchiole del तरह divide क्यों redivide क्यों मुंते finally open को so मुंते finally जो कला open को the small collection of air sac the हवालार oxygen और ده كده بيعمل اسكال سوي alveoli. Each air sac contains a large number of rounded structures called alveoli where gases exchange occur in skull side of gases exchange. Each alveolus is made up of moist squamous epithelium which is thin and flattened cells help for give diffusion of gases. Number there are over 6 million alveoli present in the lung cage representing a total surface area of 17 to 90 meter diameter. They are only 1 cm 0.1 micrometer function unit. The alveoli are the functional unit of lungs because gas exchange occur in alveoli. The alveoli are internally coated by the watery layer, thus facilitating the diffusion of gases. Blood capillaries. On outside of alveoli there is dense network of blood capillaries which provides blood to alveoli for the exchange of gases. Function of alveoli. Alveoli contain the gases exchange site C or surface where the exchange of respiratory gases occur. Pair of lungs the human have two lungs, right left, located the chest thoracic cavity. Chest cavity, the base of the lung present the diaphragm and the apexes of lungs extend above the first rib. Subscribe for membrane. Each lung surrounded by two top flexible transparent thin membrane called pleural membrane. Pleural membranes have a cavity called pleural cavity containing pleural fluid. Function of pleural membrane cells. The pleural membrane are filled with the fluid which reduces friction between the lungs and the wall of thoracic. It protects the lung from overextension or external factors. It stops the leakage of air from lungs to the thoracic cavity. बाकी भाई चैनल फॉलो लाइक सब्सक्राइब करो शेयर करो. Spongy in nature. The lungs are spongy because of the presence of millions of alveoli or air sacs. The total volume of air that can be taken into a lung is called lung capacity. Our total volume the lungs
Jaga eher Tech and Kizamanga body Tazaki Tom Discussion with them episode video.